નાના બાળિયા મિત્ર મંડળ, નાના બાળિયા જૈન મહિલા મંડળ, નાના બાળિયા 8 કોટી મોટી પક્ષ સ્થાનકવાસી સંઘ અને નાના બાળિયા ડેરાવાસી જૈન સંઘ અને સ્થાનિક એકડી સંસ્થા છે જે નાના બાળિયા ગ્રામ વિકાસ સોસાયટી એ મળે સંસ્થાઓ મળીને ગામજા ધાર્મિક સામાજિક મળે આયોજન કહીએ હતા. સૌથી પહેલાં ગાલ કહ્યું महाजन अंडर में नाना बाड़िया महाजन बाड़िया अच्छे थी, भोजनशाला अच्छे थी અને भोजनशाला में भी अच्छी तारीख में लगभग रेग्युलर 15 થી 20 જણા इनमें लाभ लेता टिफिन पर वेता અને અસી રાહત જો દર કરતા જે एक्चुअल चार्ज है ये चार्ज गणता पण जे जरूरतमंद नहीं इनके एनी जरूरत प्रमाण असी इनके भोजन में संपूर्ण राहत भी असी दे दूंगा. सैनिटोरियम में दवाखाना है वो गाम में बहुत डॉक्टरी अकड़ा महाजन जी अंडर डॉक्टरी अकड़ा प्राइवेट दवाखाना है અને એની બીજા 3 બેડ પડી કોઈ ઇમરજન્સી આવે તો ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે તી. महाजनवाड़ी जे अंदर पालर पानी એટલે વરસાદ જો પાણી સ્ટોરેજ થઈએ એડા સી એકડે એકડે લાખ લીટર જ્યાં બહુ ટાંકા બનાયા है અને આખો વરસાદ જો પાણી સ્ટોર થઈએ તો એ પાણી ગામજી ભોજનશાળા में डेली रसोई में वपराई जतो. मारा साहेब जे गरम पानी थी एने पण पानी वपराई जतो અને કોઈ જરૂર હોય તો સી પાણી બી ઘરલા પણ દીવતા. स्थानिक अंडरग्राउंड गटर योजना અને पानी जी योजना 1993 में बॉम्बे जा पंजाब बीएमसी जा आर्किटेक्ट कॉलेज तलक भाई एनी कसी कच्छ कोठे आवा અને आखे गाम जो टेबल सर्वे करे में આવ્યો અને टेबल सर्वे जे प्लानिंग प्रमाणे आखी गटर योजना जो निर्माण थयो है અને ऑन टाइम थी निर्णय करने में આવ્યો कि गाम में जे भी घर बने नवा कंपलसरी घर में टॉयलेट बनाई दो. मोदी साहब तो 2014 थी सारू हत्या के हर घर शौचालय પણ અસા જો ગામ में 1993 थी दरेक गाम में इतर कोई पण वे दरेक जे घर में शौचालय અને અતિ તારીખ અસી घर में ते चूंता कि गाम में एकड़ो पण मच्छर ना अची तारीख में અને રોજિંદી સાફ સફાઈ લા પણ पंचायत जो माणो साफ सफाई करे पण असी महाजन जो एकड़ो पगारदार व्यक्ति रखिए जे गाम में साफ सफाई कहीए था. पशु एला रोटला वे घासचारो वे पक्षी जी चण वे योजना से नियमित चालू है. गाम जी ऐसी एक गौशाला बनाई आदिनाथ पशु केंद्र इनमें लगभग 350 जेटला गौचर जीवन में पण ऐसी इनमें एक विशेषता ही कही है कि आखी इनकी जो कमिटी है कमिटी में महाजन जे माणू सिवाय 18 आलम दरेक ज्ञाति जो एकड़ो प्रतिनिधि इनमें से ट्रस्टी बनायो है लोटे पंजी जवाबदारी लगे कि ना कारण के महाजन जो पंजी एकड़ो भी पशु ने पण इतर कमजात पशु है हरिजन वे बेगवार वे ब्राह्मण वे लोहाणा वे अथवा मुसलमान वे दरेक कोमजा एकड़ो प्रतिनिधि हसी इनमें ट्रस्टी बनाया है અને દરેક કોમજા ડોનેશન पंजे घर में जन्म तिथि वे पुण्यतिथि वे 251 भी है 500 है 5000 है जगह है दरेक से इनमें गणुता. स्थानिक आवास योजना पण बनाई है, लाइब्रेरी भी है, बाल मंदिर है, प्राथमिक शाला है અને ગામના દસાજા સગીદિલ દાતા સમાજ ભામાશા ચંદ્રકાંતભાઈ ગોગરી इनके परिवार द्वारा तुलसी विद्या मंदिर जो संचालन थी रह्यो है काम जो पण सपोर्ट देतो અને આમ ગર્વથી અસી ચૂંતા ई स्कूल में बने ने आज 18 जना देश की मिलिट्री में रिक्रूट थया અને देश की सरहद ते लोग सेवा दे रहे हैं. इस शाला में 40 થી વધારે एलएलबी पास थे અને पेंटिंग क्षेत्र में आगे વધ્યા અને જે વૃક્ષારોપણ થી ગાલ થઈ આ કદાચ ખારો ગામ અહીં પહેલા ਹੁੰਦਾ પણ અસી કદાચ ઈચ્છે શકો કે 52-42 में સૌથી હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ झाड़ प्लांटेशन कदाच भाड़िया केवू ने लगभग 4000 झाड़ असी ऑलरेडी प्लांटेड असाजी आजूबाजू सराउंडिंग बड़े सरहद ते 4000 झाड़ लगे हुए हैं. गामजा जेटला जोना तळाव असा के मिल्या तळाव के पाछो खोदकाम करे रिचार्ज करे અને જો વડુ સ્વરૂપ ના અસાજી ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ગામની એડી है કે ભાड़िया लगभग 53 किलोमीटर लंबे दरियो अच्छे तो अमुक गाम जो पानी जो बहन असाजे गाम जे नदी थे ने दरिया में बने तो ई पानी स्टोरेज पांजे गाम में की कम है एडो असी तळाव बनाया बो एकड़ो मिरिक तळाव जो चंद्रकांत गोगरी परिवार जे सहयोगથી થયો है लगभग 7 करोड़ लीटर पानी स्टोरेज थी है એટલો બધો અસી તળાવ ઓલરેડી હજી તારીખ ને પણ છેલ્લે મે એન્ડ સુધી પણ એમને પાણી વેચતો ને ગામજા પશુ પક્ષી એકડો ही फायदो એમને થયો કે અલગ અલગ જાતજા પક્ષી पानी की शोध केंद्र केंद्र ही तळाव के अच्छे तरह असा के घणे नवा पक्षी नेरला मिलेता. ये कच्छ की गाल थी मुंबई की गाल कही तो मुंबई में जेकी वडो महाजन आदि स्कीम हुई असा जो गाम सहभागी वे तो शैक्षणिक वे के રહેઠાણ જો વે લોન વે કે મેડિક્લેમ વે અસી હંમેશા સાથે જે બી ગામ જો કોન્ટ્રીબ્યુશન છે અસી હંમેશા જીવતા કદાચ અસી બે અલગથી છે શકો કે રહેઠાણ યોજના 52-42 में સૌથી પહેલી
जो को गांव की मुंबई की आजूबाजू થઈ ગયું ડોંબિવલી में નાના પાડિયા ગામ છે 16 બ્લોક એકડી બિલ્ડિંગ में એકડે જ ગામ છે 16 બ્લોક થી રેઠાડ યોજના પછી જગુબાપા હાઉસ બનાવી અને કદાચ આ અતિશયોક્તિ ન કીધો વા તો એ જ વિચાર થકી વડે માજનને પણ આની આવાસ યોજના જે નવનીત નગર વગેરે થઈ એ જો વિચાર જો નિર્માણ થયું હોય અને યંગસ્ટર હશે તો યંગસ્ટર કે કચ્છ में की डायवर्ट करनो એટલે આ વિચાર કેન્દ્ર સૌથી પહેલા 1993 એટલે 32 વર્ષ પહેલા કચ્છ દર્શન જે આયોજન કે મુંબઈ કે લગભગ 600 જણા કચ્છ દર્શન હતી ત્રેડીમાં આખું કચ્છ ત્યાં ખડ્યા બરાબર નરેન્દ્ર મોદી 2014 में જે વડાપ્રધાન તરીકે આવ્યા અને 32 વેકેશન જે કચ્છ में સફેદ રણ में गुजार्या તે પડ્યા કચ્છ के पर्यटन के बूस्ट મળ્યો અને અમિતાભ બચ્ચન जो स्लोगन આવ્યો कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा तो पंजाबी जे विनेता पर पंजे गाम में वेकेशन में नता वेने असी वालों प्रयाण विचार कियो कि पंजे यंगस्टर के कच्छ में की डायवर्ट करना तो कदाच गर्वटलो चेसु के 52-42 में सौथी पहलो यंगस्टर ला कार्निवल आयोजन असी नाना पाड़ी हमने कियो बवरे पहला 500 जना मुंबई थी व्या फक्त कार्निवल ला ने लास्ट दिवाળી वेकेशन में 700 जना मुंबई थी અને 500 થી વધારે यंगस्टर ई मैराथन पंजे कार्निवल ला असी कच्छ में कोठेवी आयो અને એમને અલગ અલગ યુવાનો કે ગમે એની ગેમ્સ દાંડિયા રાસ अलग अलग गेम्स में आयोजन किया हुआ मुंबई में मैराथन में कदाच पांजे समाज ने 6000 जोड़ना होगा पण असी कार्निवल में मैराथन कई सवार जो 5 वागे 550 जना गाम आई मैराथन जी गाम जी आजूबाजू जोड़ेला अनुभव होता અને असा जे दरेक कार्य में महिला मंडळ हमेशा सहभागी रहतो અને असा जे महिला मंडळ प्रमुख भी असा जे माजेंद्र प्रतिनिधि तरीके असी हे दशा साथे कोठे आव्या आयो लगभग મને માજેન્દ્ર જૈન છે પણ અસા જે મહિલા પ્રતિનિધિ હશે સાથે કોઠે આવ્યા આયું મહિલા મંડળ પર ખૂબ સુંદર રીતે પેલી પ્રવૃત્તિ મને કહીએ તા સૌથી વિશેષતાની પ્રવૃત્તિ એ કે એજ્યુકેશન ને લેવલ તે કેજી થી કરીને અપ ટુ 12 સ્ટાન્ડર્ડ છોકરે કે એજ્યુકેશન ની સહાય મહિલા મંડળ નું થઈ હતી અને અપર ક્લાસ ની જે એજ્યુકેશન વેતી એમને માજેન્દ્ર સંસ્થાઓમાં સહભાગી થયા હતા અને આગામી આયોજન જે વારંવાર પ્રશ્ન જાચેતા અસી પૂરો કરવા માંગુતા સૌથી પહેલો સી आखे गाम जी आजूबाजू सराउंडिंग सरहद के बावड़ मुक्त करा जो असा जो ऑलरेडी प्रयास चालू थे गयो है असा जी भरे बोरे टार्गेट है कि टोटल वाड़ी आजूबाजू बावड़ मुक्त थे ने नकली नवो असी विचार क्यों है कि गाम के प्लास्टिक मुक्त बनाई हसी तला असी अनवरे चातुर्मास जे असा जो प्रवेश दिंदा ते स्कीम लॉन्च થઈ ગયો કે ગામ જો કોઈ પણ માજન जो व्यक्ति वे इतर गाम जो व्यक्ति वे पेंडी आजूबाजू प्लास्टिक जो कचरो भेगो करे नेकलो स्तर ते गने अचींदो तेंगे एकड़े किलो प्रमाण एकड़ो किलो शक्कर हसे एनके फ्री दीबो तेन प्रमाणे गाम के प्लास्टिक मुक्त रसी करला मंगुता અને લગભગ દરેક પાંજરાપોળ ગૌશાળા में तो डोनेशन से संस्था वाला तो होता અને सेल्फ सफिशिएंट की बनानी એટલે અસી એવર पंचायत में थी रिकॉर्ड में 160 एकड़ गोचर जमीन असी प्राप्त की है इनमें थी पहले फेज में 40 एकड़ में असी एन ચોમાસે પહેલાથી પ્લાનિંગ કર્યો 40 એકર में કા રંચકો ગજર વગર हो गया અને